वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज़। मैं हूं शर्मिला और आज का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग बिकॉज आज का जो वीडियो है वो है लिविंग एंड डाइनिंग रूम टूर ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ये घर बिलोंग करता है हमारे एक फ्रेंड का, हमारी ही सोसाइटी में। एंड जो घर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑफ इट। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट एंड हिट द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड ये है एंट्री ऑफ द हाउस। एंट्री के बाहर इस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है एंड दिस इज़ द एंट्री टू द ब्यूटीफुल हाउस। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है। एंट्री वे इज़ ऑल्सो डेकोरेटेड वेरी ब्यूटिफुली विद दिस ब्यूटिफुल मिरर एंड अ ब्यूटिफुल लाइट एंड इट इज़ लुकिंग सो वेरी एस्थेटिक। यू कैन सी बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इससे पूरे घर का। एंट्री इटसेल्फ इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल। And you can have a brief overlook of how the house looks. बहुत ही सुंदर घर सजाया है। This is also at the entry. One of the wall is covered with this beautiful wallpaper. And this is to the left side of the entry, this beautiful display panel of the TV. ये भी बहुत सुंदर है। The design is very beautiful and जो डेकोरेट किया है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। Looks very aesthetic. And this is the beautiful view of the living room when you enter the house. आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है। यहाँ सिटिंग स्पेस में है ब्यूटीफुल वाइट काउच एंड दिस पर्टिकुलर लैम्प वाज सो प्रिटी। बहुत ही सुंदर था ये भी देखने में एंड इट वाज लाइक द फोकल पॉइंट व्हेन यू एंटर द हाउस। बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। And one of the wall of this living room has been done up with this wooden paneling जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था living room को। Was looking very aesthetic and very beautiful. And the living room itself has the beautiful white couch and this is a recliner and a bean bag and a beautiful center table. As you can see, the TV display panel again is very beautifully decorated and the design itself, the color combination is very beautiful. इसको डेकोरेट किया है इन्होंने अब छोटे निकनैक पीसेस से जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बहुत ही एस्थेटिक लुक आ रहा था इससे भी एंड द एंटायर गेटअप एंड द एंटायर लुक was coming together so well. Along with this beautiful table, display unit table, which was having so many beautiful artifacts. Just look how beautiful the entire look is, how beautiful the display unit is looking with the these artifacts. इस तरीके के छोटे छोटे आइटम्स से जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो उसी से घर का कैरेक्टर डिफाइन होता है, हमारे टेस्ट का पता चलता है। And that is what gives the individuality to a house, gives the character to a house. And this house was really having that character, really having that soul, I would say. बहुत ही सुंदर तरीके से इस घर को डेकोरेट किया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ द हाउस लुक्स फ्रॉम द अदर एंगल। आप देख सकते हैं इस व्यू से पूरे लिविंग सीटिंग एरिया का एंड द टीवी डिस्प्ले यूनिट का लुक आ रहा है एंड इट इज़ लुकिंग सो एस्थेटिक।
वॉल पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है एंड द वॉल क्लॉक इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। सीलिंग पर भी बहुत ही सुंदर वॉलपेपर एंड फॉल सीलिंग का काम हुआ है एंड द शैंडिलियर इज़ जस्ट एडिंग टू द ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुक ऑफ दिस हाउस। Let's go over to the dining area. Dining area में behind the dining table is this beautiful display unit again, जिसको भी उन्होंने बहुत ही tastefully decorate किया है with beautiful decorative items. You can have a look at how you can decorate your home. डाइनिंग टेबल के ऊपर भी है बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडिलियर अगेन एंड यू कैन हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल विच इज़ adding to the aesthetic look of this dining area. It is matching so well with the entire decor and बहुत ही सुंदर है ये भी एंड इससे जो डाइनिंग एरिया का लुक है वो बहुत ही इन्हांस हो रहा है। They have created a beautiful seating space again to the left of the dining table and there is a beautiful statement piece on the wall. Behind the dining table is a beautiful balcony जिसको कि इन्होंने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ है, वहाँ पे भी हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। Towards the left side of the living space comes the kitchen and kitchen की wall पर ये बहुत ही सुंदर statement piece से डेकोरेट किया हुआ है and then there is this focal point I would say of the entire house जो कि मुझे सबसे सुंदर लगा इस सुंदर से घर में वो है ये beautiful मंदिर। ये मंदिर है towards the right of the kitchen and बहुत ही सुंदर है। I think many of us can take ideas from this beautiful मंदिर। Everything is beautiful starting from the color combination to the beautiful idol and the beautiful decoration. बहुत ही सुंदर है and I think it is the beautiful focal point of this entire house. बालकनी को भी बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑफ द बालकनी एज वेल। सो लेट्स गो इनसाइड द बालकनी एंड सी हाउ इट इज़ लुकिंग। देयर आर दीज ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड अ ब्यूटीफुल सिटिंग स्पेस, सिटिंग एरिया विच इज़ क्रिएटेड विद द गार्डन फर्नीचर्स एंड दिस ब्यूटीफुल वॉल अगेन विच इज़ डेकोरेटेड सो ब्यूटिफुली। इसको उन्होंने पूरा ग्रीन लुक दिया है एंड द एंटायर ग्रीन look of this area is so beautiful and peaceful, जो कि I think brings the whole look of the living and dining area together. उसमें एक बहुत ही अच्छा green charm add करता है I would say and really very beautifully decorated again. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस सुंदर से घर का लिविंग रूम टूर? आई होप कि मुझे बनाने में जितना मज़ा आया था आपको ये वीडियो वॉच करने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आया हो। बहुत ही सुंदर घर है एंड आई हैव मैनेज टू कैप्चर जस्ट अ स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू कमेंट एंड टेल मी हाउ यू लाइक द ब्यूटीफुल हाउस एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, take care, stay safe and stay happy. Bye bye.